República de Angola. Isto não acontece por mero acaso, acontece porque ambos os países, Angola e a Índia, reconhecem a importância das relações de amizade que mantemos desde o ano de 1979 e a necessidade de reforço das relações de cooperação entre os nossos dois países. Nós identificamos, quer naquela ocasião, em maio do corrente ano, quer agora com os instrumentos que acabamos de assinar, identificamos as áreas que são de interesse comum em serem desenvolvidas. E o que precisamos daqui para frente é colocar em funcionamento a Comissão Mista Bilateral e, a partir daí, tudo fazermos para colocar na prática os entendimentos a que chegamos até a presente data. Precisamos de fazer as coisas acontecerem. Ficamos muito tempo sem que tivesse havido visitas ao mais alto nível. Agora que estão a acontecer, precisamos que a outros níveis, a nível dos técnicos, a nível dos responsáveis dos ministérios, implementem os entendimentos que estão espelhados nos acordos e memorandos que assinamos, quer em Nova Delhi, quer aqui em Luanda. Angola está particularmente interessada em cooperar com a Índia no setor da saúde. A Índia é muito forte nesse setor da saúde, não apenas pela qualidade dos seus médicos, que gostaríamos de ter muitos deles aqui no nosso país, nos nossos hospitais, mas sobretudo na possibilidade dos nossos médicos e especialistas beneficiarem de formação, quer licenciaturas, quer pós-graduação, nas universidades indianas. Queremos particularizar o caso da luta contra o cancro, uma das poucas doenças que ainda somos obrigados a enviar para o exterior a maioria dos cidadãos angolanos que são acometidos por esta doença. Portanto, queríamos que os nossos especialistas tivessem melhor formação neste domínio lá na Índia, mas também que, e porque ainda está na fase embrionária, estamos ainda a construir o novo hospital de oncologia, que nesta fase embrionária pudéssemos começar já a beneficiar da cooperação com a Índia, que os especialistas indianos acompanhassem o evoluir das obras, o tipo de equipamento que pensamos instalar, enquanto se está a dar formação ao nosso pessoal. Mas de saúde com a Índia não é tudo. Nós gostaríamos de ver os investidores indianos, tanto do setor privado, a montarem fábricas de produção, quer de medicamentos, quer de vacinas, para consumo humano, aqui no nosso país. Neste domínio a Índia também é muito forte, sobretudo em genéricos, abastecem praticamente a indústria farmacêutica de todo o mundo. A Índia é forte ainda nas tecnologias de informação e comunicação. É forte na indústria do aeroespacial. Nós temos apenas um satélite de comunicações,
É verdade que encomendamos um segundo satélite de observação e gostaríamos que também neste domínio pudéssemos andar lado a lado com a Índia, que tem, portanto, a ciência neste domínio muito avançada. Outro setor é o da defesa, onde a Índia também deu saltos bastante significativos no desenvolvimento de sistemas de defesa bastante avançados, drones e outros, na aviação. Portanto, gostaríamos também de trabalhar com a Índia nesta área do setor da defesa e segurança, não apenas a importar o que eles fabricam, mas dentro do possível também ver se conseguimos trazer algumas dessas fábricas indianas aqui para o nosso território, para ver transferência de conhecimento e, portanto, Angola também ser produtora de armamento da última geração. Portanto, senhora Presidente Draponi Murmu, mais uma vez seja muito bem-vinda a Angola. Nós damos uma grande importância ao facto de ter feito coincidir essa sua visita de Estado com a sua participação nas comemorações do 50º aniversário da nossa independência nacional. É algo que vai ficar registado nos anais da história, na história das relações entre os nossos dois países, Angola e a Índia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A vez agora da Sra. Presidente Draupadi Murmu. महामहिम अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति, देवी और स्वजनों, नमस्कार। मुझे लुआंडा आकर बहुत खुशी हो रही है कि किसी भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला का पहला राजकीय दौरा है। मैं महामहिम राष्ट्रपति लॉरेंसो का उनके सौहार्दपूर्ण आमंत्रण के लिए धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव में भाग लेने और स्टेट विजिट पर आने का अवसर दिया। मैं अंगोला की सरकार और जनता का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे और मेरी प्रतिनिधि मंडल का आत्मीय स्वागत किया। मेरी टीम में हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना तथा हमारे संसद के 2 माननीय सदस्य श्री पी बसवा और श्रीमती डी के अरुणा शामिल है। आपकी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और स्नेहपूर्ण अभिवादन लाई हूं। भारत ने एंटी कॉलोनियल प्रयासों के तहत अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंगोला के पुनर्निर्माण और विकास में निकट सहयोग किया। हम अंगोला की प्रगति और यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए किए गए डेवलपमेंट एफर्ट्स की प्रशंसा करते हैं। हम अंगोला की अफ्रीकन यूनियन की वर्तमान अध्यक्षता के रूप में नेतृत्व के लिए भी उन्हें बधाई देते हैं। ये वर्ष भारत अंगोला संबंधों के एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष मई में हमें महामहिम राष्ट्रपति लॉरेंसो को उनके भारत के पहले स्टेट विजिट पर स्वागत करने का सम्मान प्राप्त हुआ
उनके विजिट में हमें हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों की सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए क्रेडिट लाइन के अलावा कृषि, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद तथा सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के क्षेत्र में 3 MOUs पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और अंगोला की साझेदारी आपसी विश्वास, परस्पर सम्मान और हमारे लोगों के समृद्धि भविष्य की साझा दृष्टि पर आधारित है। हम द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और क्षेत्रीय व वैश्विक मामले में विचारों के आदान प्रदान के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति लोरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नए क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है। राष्ट्रपति जी और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हम विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्र में तथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के व्यापक संदर्भ में अपने सहयोग को गहन बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमने फिशरीज, एक्वाकल्चर और मेराइन रिसोर्सेस तथा कॉन्सुलर मामले में सहयोग के लिए 2 MOUs भी संपन्न किए तथा एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम अंगोला का IBCA और CBA में स्वागत करते हैं। कल दोपहर मुझे अंगोला की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट से मिलने का अवसर मिलेगा और मैं अंगोला की संसद के माननीय सदस्यों को संबोधित करूंगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अंगोला के साथ संसदीय सहयोग को बढ़ाने की आशा करता है। मैं भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। हम लोगों के सामने अंगोला के माननीय राष्ट्रपति बहुत सारे मुद्दे सामने रखे। सभी क्षेत्रों में हम लोगों का बातचीत पूर्व हो चुका है। इस दिशा में दोनों पक्ष हम साझेदारी में काम करने के लिए हम इच्छुक है। मुझे लगता है दोनों पक्ष विचार विमर्श करके ये मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और दोनों देशों के विकास को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति लोरेंसो को उनके आतिथ्य और स्वागत के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे ये यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों तथा मित्रता को और अधिक मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।